अगर आप बिगिनर हो या आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। याद रखिए, इंग्लिश बोलने से पहले रीडिंग स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप रीडिंग करोगे, उतनी फास्ट आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस सेशन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस। यस, वो भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। आपको करना ये है कि सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होंगे। आप उन सेंटेंसेस को बस ध्यान से देखेंगे, एक एक वर्ड्स पे नज़र डालेंगे और फिर मुझे ध्यान से सुनेंगे कि मैं उन वर्ड्स को कैसे पढ़ रही हूँ। और बस मेरे पीछे पीछे आप फॉलो करते रहिए, आप मुझे रिपीट करिए। दैट्स इट। तो चलिए फिर, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज द फर्स्ट सेंटेंस बिफोर यू। दिस इज अ cat. This is a cat. Repeat. Nice. The sun is hot. The sun is hot. Repeat. Great. I have a red ball. I have a red ball. I have a red ball. Great. We go to school. We go to school. We go to school. Great. She is my friend. She is my friend. She is my friend. Now you repeat. Great. Next. The dog can run. The dog can run. The dog can run. Fantastic. The next one. It is a big tree. It is a big tree. It is a big tree. Nice. The next one. He is eating an apple. He is eating an apple. He is eating an apple. Great. Here we go to the next sentence. I like milk. I like milk. I like milk. Great. The next. He has a blue pen. He has a blue pen. He has a blue pen. Great. The next sentence. The bird can fly. The bird can fly. The bird can fly. Great.
The next sentence. It is raining today. It is raining today. It is raining today. अब आप बोलिए. Cool. This is my house. This is my house. This is my house. Now you repeat. That's amazing. The next sentence. She is very kind. She is very kind. She is very kind. That's awesome. तो अभी तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं और ये वीडियो आप एंजॉय कर रहे हैं, मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, then please like this video and do not forget to subscribe to my channel, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ऐसी बहुत सारी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस सेशंस लेके आती रहूँ. Let's continue. We play in the park. We play in the park. We play in the park. अब आप बोलिए. That's lovely. The next sentence. The baby is sleeping. The baby is sleeping. The baby is sleeping. Nice. The next one. I can read English. I can read English. I can read English. Superb. तो अब नेक्स्ट टाइम से आप ये सेंटेंस जरूर बोलना. I can read English. Great. The next one. The sky is blue. The sky is blue. The sky is blue. है ना बहुत इजी? Yes, it is. एक और सेंटेंस करते हैं. They are my parents. They are my parents. They are my parents. Outstanding. चलिए, the last sentence of this video today. अब एक last sentence और करते हैं reading practice. Let's go. She has a new dress. She has a new dress. एक साथ पढ़ें. She has a new dress. आप भी करिए ट्राई. Fantastic. Here are some reading tips from my side. पहली चीज़ तो आप सेंटेंसेस को तोड़ कर मत पढ़िए. सेकंड, हर वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए और रोज़ 5 से 10 मिनट तक रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिए. ऐसा मत सोचिए कि आप रीडिंग नहीं करेंगे तो भी प्रोनाउंसिएशन आपको आ जाएगी करनी. तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. ज़्यादा नहीं तो 5 to 10 मिनट्स ओनली, बट रीड. सो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कितना ही आसानी से आपने ये सारे इंग्लिश सेंटेंसेस रीड कर लिए मेरे साथ. डोंट फॉरगेट, स्लो रीडिंग से फास्ट रीडिंग तक जाना ही आपका गोल होना चाहिए.
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ। टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।